Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं हम मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे और नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे बीएसई और एनईसी के बारे में और खबरों की बारीकियों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपलब्ध सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट विशाल दहिया। विशाल, बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्र में। वेलकम। थैंक यू राजेश जी। नमस्कार हर्ष जी, धन्यवाद। शुरू करते हैं मार्केट मंत्र। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। Domestic benchmark indices failed to hold early gains. Nifty closes below 24,000 while Sensex was down by 126 points. Central government launched Black Money and Imposition of Tax Act in over 600 cases by the end of last fiscal year, informs the Finance Ministry. And crude oil prices trading down. Brent crude shed 0.9% while WTI lost 0.7%. भारतीय शेयर बाजारों में बेहद उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद आज तीसरे दिन भी मामूली गिरावट। सेंसेक्स 126 अंक तो निफ्टी 63 अंक गिरा। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 17,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि से जुड़े 650 से अधिक मामलों में 163 मामले दायर किए गए। और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $76.23 तो WTI $72.89 पर पहुंचा। भारतीय शेयर बाजारों में आज दिन की शुरुआत तो काफी बेहतर रही थी, थोड़ी रिकवरी की कोशिश थी, लेकिन ये रिकवरी ज्यादा देर ठहर नहीं पाई। बाद में मार्केट थोड़ा सा गिरा है। आज तीसरे दिन भी सेंसेक्स 126 अंक गिरा, 78,633 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 63 अंक की गिरावट आई और ये 23,992 पर रहा। जैसा मैंने बताया, कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स में मजबूती आई थी, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाई। सत्र काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, इस पे अभी आगे चर्चा करेंगे। और विस्तारित बाजार की भी बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में आधा प्रतिशत की गिरावट रही है। Indian stock markets have recouped some of their losses in today's session, tracking a global rebound. However, the market failed to hold the early gains and ended lower for the third straight session amid volatility. At close, the Sensex was down 126 points or 0.16% at 78,633 and the Nifty shed 63 points or 0.26% at 23,992. In line with the benchmarks, the broader market at BSE also ended with losses as mid-cap and small-cap indices shed 0.5% each. In the Sensex index, 19 out of 30 companies traded in the negative territory. The major laggards were Mahindra & Mahindra 1.77%, SBI-N 1.65% and Bharti Airtel 1.53%. The top gainers today were JSW Steel 2.36%, Tech Mahindra 1.63% and Larsen & Toubro 1.44%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors logged losses. The major laggard being telecommunication 1.15%, financial services 1.03% and consumer durables 0.92%. However, realty with 0.84%, services with 0.27% and IT with 0.25% logged gains. The overall market breadth at the BSE was negative. Out of 4,028 companies, shares of 1,592 companies advanced,
2,344 declined and 92 remained unchanged. और रुपए की बात करेंगे, विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद रुपए ने आज अच्छी वापसी की। $1 की कीमत 83 रुपए 93 पैसे रही है। डॉलर इंडेक्स आज 0.44% की मजबूती के साथ 103.13 पर कारोबार कर रहा था। So, Vishal, today the India VIX, which commonly refers to as the fear gauge, stood at 18.74. Does it reflect that the Indian market will continue to be sensitive and vulnerable, keeping the global events in mind? Well, yes, Rajesh, the figure on the VIX clearly indicates that the volatility is here to stay for some time. Although it will not be that sharp volatility as far as Indian markets are Like the concerned. one we witnessed yesterday. And even if you do a bit of a comparison, between yesterday and today, not only Indian markets but the other international markets as well. Nikkei, if you look at it has also gained around 9%. It came down 11% yesterday. Today it gained 9%. So it looks like that the shock and awe which was there yesterday coming in from based on the news trickling in from United States, the American markets, from the American central bank, specifically the Fed, clearly pointing out towards the recession fears, the unemployment data, and even respected institutions like Goldman Sachs saying that there is a 25% probability of a recession setting in the United States. That has gone up from 15% to 25% in their estimates. So that was the immediate trigger yesterday, but this does not mean that those triggers have died down entirely. The US central bank has sort of tried to assuage the fears today by saying that yes, they are taking measures, and it looks like that next month, that is in September, there's a rate cut which might be expected, whether it'll be 0.25 basis points or 0.50. That is something which we'll have to watch out for. The analysts are pushing for 0.50 continuously for both September and October as well. It is clear that the kind of soft lending which the US Fed was hoping to make for the American economy is not happening now. The question is, how hard will this lending be? So what you mentioned a while back, the domestic markets tried to rebound, mirroring the Asian markets today. But that momentum was short-lived and closed below the threshold level of 24,000, as we read out. So in such a scenario, what should the investors be doing? What is your advice to the investors? As you said, volatility is here to stay. Well, see, before we go to the investors, let's understand this one point as well, because when we look at the trajectory of the Indian stock market indices today, it's clear that they fought back bravely in the first half and then lost some of the ground in the second half of the day. Why is this happening? Of course, the FPIs are moving out. The outflow of the foreign investors is there, but that is countered by the domestic investors. Yesterday, the countering mechanism was not to the tune of the outflows, so the market witnessed a bit of a slump. But today, if we go deeper into the numbers, we'll find out that they've tried to match the game. So it looks like the domestic investment is sustaining itself. That shows that the fundamentals are pretty strong. But having said that, looking at the VIX numbers, looking at the volatility factors as well, as far as investors are concerned, in a scenario like this, it is better to have a wait and watch strategy, adopt that strategy, because
it's just not the international factors. It's also the overvaluation of several companies in several segments, and I'm not just talking about small and mid cap only, even large companies as well. Their PE ratio, their PB ratio, that is slightly on the higher side. So it looks like this is a much sought after or much awaited correction which is happening in the market. Let the dust settle down, and by the time the dust settles down, perhaps the international cues will also have some positive impact coming in. So the investors are watching the appreciating yen. We would like you to throw some light on that because today they did quite well. They rose by 12%. 12% तक गया था. Yesterday 14% they were Yes. down, but today they went up by 12%. Yes, Take us through the journey and See- what to expect in future. it's very interesting. When we look at Japan, it's really interesting. Let's look at it this way. There's a term known as yen carry trade. Yen is Japanese currency, and that is really important and significant from the global economic point of view. Japanese bank, the central bank, had not increased the interest rates for more than a decade. The interest rates in Japan are somewhere around 0% only, 0.1. In March, they brought it to 0.15. And then last week, they brought it to 0.25. That was a historic decision. The reason why it is historic and the reason why there is a sort of a tunneling impact on the global economy is because yen is the currency which is the preferred one when you're talking about carry trade. That is, people prefer to the large scale investors and Japanese domestic investors as well prefer to borrow in yen, invest the money in other instruments or other assets as well, and then earn profit. But what the Japanese central bank did a few days ago was raise interest rates from 0.15 to 0.25. Now, that was a historic change. Somebody who had borrowed yen and invested that money somewhere, for them to pay an extra amount of interest on that borrowed money would mean that they'll be eating into their profits. So a selling spree started by these investors. And that is why the Japanese yen carry trade is a very important instrument and segment as well when we're talking about yesterday's events. It's a mix of factors. Of course, the US numbers, the sentiments there, the recession figures, the recession fears, the unemployment figures, but the Japanese yen carry trade also played a very important part. बिल्कुल. और मार्केट मंत्रा के जो श्रोता हैं इनको आम भाषा में समझाने के लिए यहाँ हमारे एक्सपर्ट ने कैरी ट्रेड शब्द का इस्तेमाल किया है. क्या होता है कैरी ट्रेड, राजेश? थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं. दरअसल जहां पर जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट बहुत कम, शून्य के बराबर होता है, जैसा अभी हमारे एक्सपर्ट विशाल जी ने बताया कि जापान में आमतौर पर यह शून्य या शून्य से बहुत ज्यादा बढ़ा 0.0501 इस तरीके से होता है. वहां से लोग पैसे लोन ले लेते हैं और किसी दूसरी कंट्री में जाके स्टॉक मार्केट में वहां के इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं. तो कम पैसे पे ब्याज पे लोन लेना और जहां ज्यादा रिटर्न आ रहा हो वहां लगा देना, इसे कहते हैं कैरी ट्रेड. यही जापान ने किया था और यूएस मार्केट में उनके काफी सारे पैसे लगे हुए थे. हेजिंग होते हुए यूएस मार्केट से वो पैसे इंडियन मार्केट में भी आए थे. और जब यूएस के डेटा आने शुरू हुए रोजगार से संबंधित या इन्फ्लेशन से संबंधित, तो अचानक से इन इन्वेस्टर्स ने उन पैसों को निकालना शुरू किया. और पैरेलल इसके जो स्टोरी चल रही थी वो ये था कि जापान का येन डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा था. हालांकि जापान एक एक्सपोर्टर कंपनी है और लगातार अपने येन को थोड़ा गिरा के वो रखता है एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए. इस वजह से ये पूरी कहानी है. विशाल जी, इफ आई एम राइट? जी बिल्कुल सही है हर्ष जी. और ये जो कैरी ट्रेड है इसका खामियाजा कल जो विश्व के कई आर्थिक बाजार हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के बाजार रहे हों या और एशियाई बाजार रहे हों, यूरोपीय बाजार रहे हों, उनको भुगतना पड़ा. क्योंकि ये जो दो चीजें एक साथ चली, अमेरिका से जिस तरह के संकेत आए और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो फिगर्स हैं, यानी कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं अमेरिका में, वो 3 साल के सबसे ज्यादा हैं, 4.3% के आसपास हैं. और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती, क्योंकि
उसके साथ साथ आप जापानीज येन कैरी ट्रेड में जो बदलाव चल रहा था उसको अगर जोड़कर देखें तो विश्व में जो आर्थिक बाजार हैं, जो सेंसेक्स भारत का है, इसी तरह और मार्केट्स हैं, उनमें संकेत सही नहीं गए और लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू किए, खासतौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें। और खास तौर पर हमने देखा कि आज भी मार्केट, इंडियन मार्केट जो है, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट रही है, बेहद मामूली गिरावट है। आम जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर नहीं है, जो निवेश करता है कि हमारे पैसे का ग्रोथ हो, वो इन्फ्लेशन से बीट कर सके, उससे मैच कर सके, ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जो 1 महीने पहले 2 महीने पहले मार्केट में घुसे होंगे, हो सकता है कि उनको थोड़ा सा नुकसान दिख रहा हो, लेकिन जो 3 साल 4 साल पहले या 2 साल पहले घुसे हो, उनको उतना नुकसान होता नहीं दिख रहा होगा। उनके लिए एज एन एक्सपर्ट आपका क्या सुझाव है? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरा मानना है कि आप इतने समझदार होंगे कि आपने जो क्यूज हैं उनको समझते हुए कल जो मार्केट में हुआ उससे पहले ही अपना फैसला ले लिया होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या मिड टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये जो समय होता है जब बाजार में उतार चढ़ाव बड़ी तेजी से हो रहे होते हैं, वो समय ना ही तो खरीदने का है, ना ही बेचने का है। वो समय चीजों को समझने का है, किस तरह से आप जिस सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं, आप जिस कंपनी पर दांव लगाना चाहते हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी पी रेशियो क्या है, उसकी पीबी रेशियो क्या है, और उसके जो फाइनेंशियल के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, क्या उसकी मजबूत स्थिति है, और उसके आधार पर स्टॉक मार्केट में किस तरह से उसका शेयर परफॉर्म कर रहा है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा सा संयम बरता जाए इस समय मार्केट में, तो जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए ये बहुत ही So will the global sentiments need to stabilize? These need to stabilize for the Nifty to start recovering. Well, global sentiments, Rajesh, do have a lot of impact, and they will, of course, continue to have that impact, and we would expect that these sentiments to stabilize. But then, these are factors which are not in our control, as in not in the control of the Indian government, not in control of the market regulators or the Indian central bank, and of course, investors have no say out there. For example, when we look at the US, economic situation, the recession fears, the unemployment data, or the Japanese central bank's decision to increase the rates, which had a domino effect in the yen carry trade. Then you look at the geopolitical situation as well. There is a very, very concerning situation which is, manifesting itself in the Middle East, Yeah. vis-a-vis Iran, Israel. It's something which everybody will have their eyes on, as like what's happening there, because it will have an impact on global markets, and which will then have a tailwind will have some sort of impact on the Indian markets as well. But then, if the domestic scenario is strong enough, the fundamentals are strong enough, then we can withstand those impacts. And this is also proven by the fact that even market analysts or stock market analysts or investors from countries like Japan or European countries, they're reposing more faith in the Indian market. They're saying that we're not bothered about our investments in the Indian market because the fundamentals are strong, because there the money is flowing in from the domestic investors. They're not wholly dependent on the foreign investment portfolios. Okay, so should the investors exercise caution given the situation that we are all in, Vishal? And should they shift their focus towards defensive sectors like FMCG, IT, and pharma? That's what is happening. In fact, if you look at today's market movements, it is pretty much clear that those defensive maneuvers have already started by the big fish. They're moving towards the FMCG, IT, and pharma, and this will have in the coming days. This will also manifest itself in the movement by some of the retail investor segment, because they would also want to emulate the steps taken by the big investors and try and find safe haven there as well. But again, caution is the key word. So how to mitigate the downturn risk? Do we look at how the crude behaves? Do we look at the rate cut happens or not happens? And this includes RBI.
Well, going further in the near future, there are going to be three important factors. One is what does the US Fed decide? Does it decide to go for just 0.25? Does it go for 0.50? Does it go for only 1 month, that is September, or it goes Nothing in, at all. or nothing at all is something which is going to have a very tailspin impact. I believe the US Fed is left with very less maneuvering room when you're talking about that maintaining that hawkish stand. Second is, of course, the RBI's stance, RBI's monetary policy. What does it do given the global factors? Third is the oil market. And the oil market, again, the geopolitics has a lot of impact on the oil market. How will the geopolitics of it all behave and work around? Because from India's perspective, we have a very huge stake in the Middle East pie. It's just not about oil. It's about various other aspects as well. We've maintained a very good relationship so far, but then the kind of escalation of conflict which is threatening to happen in the Middle East, will it come to our door as well? And the situation in the neighboring countries, of course, is going to be a very important factor in the next Will it come week. to our door? But it can, by way of supply being reduced or cut by the oil producing countries. What happens then? Supply might not be a very big cause of concern for India. Rates increase in the oil prices might be a sort of a concern for India. As far as supply is concerned, it looks like India has covered its bases very effectively in the past few months or so, specifically during the Russia-Ukraine conflict, when we opened that window with Russia. So in terms of supply, I believe I'm confident that that should not be a cause of concern unless all hell breaks loose. But then prices, the increase in oil prices due to impending or the threat of the larger conflict in the Middle East is something which India should watch out for. एक नजर डाल लेते हैं क्या रहा एशियाई और यूरोपीय मार्केट। एशियाई बाजारों में भी पिछले 2 दिन से जारी गिरावट आज कुछ थमी। जापान का निकेई सूचकांक 9% बढ़ा आज। दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में भी 3.2% की बढ़त रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.23% मजबूत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.41% गिरा। हांगकांग के हैंगसेंग में भी 0.31% की गिरावट दर्ज हुई है। यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख रहा है। लंदन के फुट्सी 100 और जर्मनी के डैक्स में मामूली बढ़ोतरी रही, जबकि फ्रांस के कैक 40 में मामूली गिरावट रही है। Major US markets extended a downturn yesterday, triggered by economic uncertainties and recent turbulence in global financial markets. The Dow Jones Industrial Average dropped 2.6%. The broad-based S&P 500 fell 3%, while the tech-heavy Nasdaq Composite Index declined 3.4%. Vishal, the question is, how bad actually are the US numbers? Well, if you ask me, frankly, historically speaking, if you look at the recent history, then those are bad numbers, because look at the unemployment figures. 4.3, a 3-year high. For a developed economy like United States of America to have a 3-year high number of the unemployment figure is a cause of concern. Then look at the indications coming in from respected market analysts like Goldman Sachs. It says the fear of recession in the American economy is now 25%. Just around 2 months ago, their assessment was that it's just around 15%. So increasing it from 15 to 25% is also a clear indication that yes, not everything is right. Then look at the IT sector. Most of the US economy, if not most, then a significant portion of the US economy is based on the IT sector as well. There has been a lot of retrenchment in IT sector in the recent past. A lot of people have lost jobs. A lot of companies are, so-called shedding the extra baggage which they have. That seems to have a downturn impact on the other, attached economies as well, but also on the US economy. Looks like the unemployment rate is going on a higher side, not just because less qualified people are not able to find job, but also because highly qualified people are out of jobs now. So those numbers are piling up,
They will have to deal with those numbers. That's one. Inflation figures. That's two. Then the US Fed Reserve's hawkish trend, extended hawkish trend, I would say. And now they'll have to, do some magic to ensure that the lending is not hard enough for the US economy. The soft lending part, I believe, is now out of the question. The point is, how hard will the lending be? So, what basis point would be the best suited for the world? 25 basis, 50 basis? Well, the analysts believe that given the stance which the US central bank has taken so far, if they can, ease through their maneuvers right now for the next at least 2 months and consecutively increase it by 50 basis point 0.50, then it's going to have some impact, and because that's going to give some breathing room to the US economy. That's one. And then it'll have trickle down effect on the European markets, on the Asian markets as well. And this is a close knit circle. इकोनॉमी डजंट हैव एनी बाउंड्रीज. ये बड़ा एक विशेष साइकिल है. हम देख रहे हैं विशाल, लगातार यूएस फेड जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने जो रेट्स हैं वो बढ़ाते जा रहा है. हॉकिश स्टैंड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसका फ्लिप साइड ये रहा है कि वहां का ग्रोथ अफेक्टेड हुआ है, ग्रोथ कम हुआ है, और ग्रोथ कम होने से जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं, और ये फिर कुल मिला के उसके आंकड़े को प्रभावित कर रहा है. भारत में भी ये स्थिति 2 साल पहले आई थी, लेकिन आरबीआई ने जिस बैलेंस तरीके से ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को मैनेज किया, इसकी मिसाल पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ले रहे हैं. जी बिल्कुल, आपने सही कहा. और महंगाई और विकास ये एक दुधारी तलवार है, डबल एज स्वॉर्ड है. सभी सेंट्रल बैंक्स को इस पर चलना पड़ता है. कितनी बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को मैन्यूवर कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि महंगाई बढ़े नहीं और ग्रोथ घटे नहीं. ये अपने आप में एक कुशल प्रबंधन जिसे कहा जाए, आइडियल सिचुएशन. बिल्कुल आइडियल सिचुएशन और कुशल प्रबंधन जिसे कहा जाए सेंट्रल बैंक की तरफ से, रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंकों की तरफ से, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी इकोनॉमी का हो, वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 17,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि से जुड़े लगभग 652 मामले सामने आए, और काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिरोपण अधिनियम के अंतर्गत 163 मामलों में मुकदमा दायर किया गया. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि जुलाई से सितंबर 2015 के बीच इस अधिनियम के अंतर्गत 3 महीने की अवधि के दौरान 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति से जुड़े 648 मामलों का खुलासा किया गया था. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के माध्यम से लगभग 2,500 करोड़ रुपए वसूले गए हैं. काले धन को लेकर विशाल जी, देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एक ठानी थी, उसके परिणाम, उसके नतीजे आ रहे हैं, और पारदर्शिता इसमें हम देखने को मिल रहे हैं कि लोकसभा में जो रिप्लाई है, इस रिप्लाई से यह पता चलता है कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए जुर्माने के माध्यम से इसमें वसूले गए. जी बिल्कुल. और काले धन को लेकर सरकार का जो रुख है, जो स्टांस है, वो पहले ही दिन से साफ था, क्लियर था. और जिस तरह के कानून भी बनाए गए हैं, उन कानूनों का जो सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, उससे साफ तौर पर जो ये आपने लोकसभा में सरकार ने जो बयान दिया है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि उसके नतीजे सामने आ रहे हैं. बिल्कुल. Moving on, Brent and WTI crude were trading down in the global crude market today. Brent crude was down 0.9% to trade at $76.23 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate was trading 0.7% down at $72.89 per barrel when reports last came in. सोने में गिरावट बनी हुई है. ताजा जानकारी जो है, 10 ग्राम सोने की कीमत 69,070 रुपए रही, जबकि 1 किलो चांदी 79,210 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पे दर्ज की गई है. वक्त अब खत्म हो रहा है मार्केट मंत्रा का. विशाल, आप आए, आपने हमसे बातचीत की और खबरों की बारीक जानकारियों पर विस्तार से चर्चा की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद हर्ष. Thank you for being with us, Vishal. And before we close, the headlines once again. Domestic benchmark indices failed to hold early gains. Nifty closes below 24,000 while Sensex was down by 126 points. Central government launched Black Money and Imposition of Tax Act in over 600 cases by the end of last fiscal year.
And crude oil prices trading down. Brent crude shed 0.9%, while the WTI lost 0.67%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market